Hello everyone, planning a vacation soon? Staying in a hotel? Oh yes, this session is for you if that be the case. Even if that is not the case, the session is very important for you. So what I'm going to do in this particular session, I'm going to give you some wonderful words related to hotel and of course some tricky pronunciation as well. So be with me for next 20-25 minutes and enjoy the words, the vocabulary, and the conversational sentences that I'm going to offer you. Okay, so here we go. This is the session that we have today, speaking in English at hotel. And mind it, I said at hotel. Actually, hotel के साथ हम आम तौर पर जो preposition लगाते हैं वो at लगाते हैं. Though you can use in as well, as I have explained it earlier too. At is used for general location, while in is used for, yes, very specific location. So let's go in, dive in and see what do we have with us. First of all, some tricky pronunciation. There are many words actually in English, and especially when we talk about the hotel, and I said hotel, yeah? So that we find not at ease actually pronouncing them. So what I'm going to do, I'm going to ask you and then I'm going to tell you how would you pronounce these words. And these are some of the words that I'm going to take today. So one by one, tell me, how do you pronounce the first one? This is hotel. Now, I'm not going to give you the meaning of all the words because these words we are going to cover inside. So be with me for next 15-20 minutes if you really want to know what do these words mean. Some of them. Many of them you might be knowing, okay, because this is hotel. Now, what is this? This is motel. So, if this is hotel, this is motel. Okay, now, what is the difference between hotel and motel? So, motel used to be earlier when you would carry a motor vehicle with you. Now, I said vehicle, not vehicle. So, it is vehicle. Yeah. So, when you would take a vehicle and you would park inside the hotel. So, there was no parking as such there. So, but you would take it inside the hotel and you will park your motor there. And this is why this is a portmanteau word. Portmanteau word is a word which is a combination of two words. Motor plus hotel is motel. Can you tell me any other portmanteau word? So give me in the comment section if you know any portmanteau word. I give you another one. Infotainment. Information, entertainment. Yes. So the next one is, this is restaurant. Now this again, this T is very light, but it is there. Restaurant. And this word again has been taken from French. Another word is also from French. It is cafe. Okay, French word. This word is also, the next word is also a French word. How do you pronounce the next word? This word. So this is à la carte. À la carte. So this, again in French actually it is called à la carte. So à la carte basically means, no, why should I tell you? I'll tell you inside the session. Yes, I'm going to tell you this as well because I'll ask you questions. I'll ask you sentences and you tell me how would you use that. What is this word? This is buffet. So here we don't pronounce T at all. So it is buffet. We don't pronounce T here as well. This is valet, used for parking. I'll ask you and tell me the answer there. Okay. And then the last one is concierge. Now this is not cone. This is concierge. Okay. So these were some of the tricky pronunciation, the words with tricky pronunciation. But I'm going to give you more. Okay. Now let's come to the vocabulary part. Yeah. And I'll tell you what do they mean one by one. Okay. Let's go to the hotel vocabulary. So please speak after me. Hotel. Motel. Yeah. So let's come to the, amenities. Now amenities किसे कहते हैं जल्दी से बताइए because I'm not going to give you a lot of time today. You gotta tell me or I'll tell you. So amenities कहते हैं जो facilities हमें मिलती हैं. The facilities that we get inside the hotel. Now all these are amenities. So in like in a hotel you might have maybe a cafe, a swimming pool, okay, a restaurant. So all these are what? These are facilities and these facilities are called amenities. So amenities are local facilities. Now these facilities can also be in a city. So in your city, do you have some amenities in your city? So if they are there, please write these facilities or amenities in the comment section.
So what can these amenities be in your city? Hospital, library, a fire station, that can also be amenity. Yeah, so do you have these amenities? Please write it down there. Yeah, webinar, great. Rom-com, good one. Okay, yeah, romantic comedy is, by the way, called rom-com. Acha, tell me, who is a bellboy? Yeah, what is a bellboy in English? And especially when you're talking about hotel, what is the job of a bellboy? The job of the bellboy is this. So I've given you a picture as well so that you can relate to it. So he's a staff member who helps guests with their luggage. Now this is luggage. So it is not luggage. Luggage. I'll give you a lot of words actually which have got very tricky pronunciation today. So be with me till the very end. Okay. So we have this luggage, that is bellboy. How do you pronounce this? What is the difference between kitchen and kitchenette? And then we have pantry also. Okay, so kitchen, kitchenette and pantry. So remember, the bigger one is kitchen. Okay, and then we have pantry. So pantry generally you have maybe in the moving train, you have pantry car. This is called pantry car, where your food is made, it is fixed. And in certain pantries, they also serve the food. Okay, so that is pantry. And the kitchen is that we have kitchen. So what is kitchenette? What is kitchenette? Can you tell me the difference between kitchen and kitchenette? Yeah. So kitchenette is very small. Remember one thing, if you have any word with E-double-T-E in the end, that is the smaller form of something else. So give me some word which has got E-double-T-E after them. Give me some words. E-double-T-E. Do you remember any word? And then you find out that, okay, this is the small form of some bigger word. E-double-T-E. And there are some words actually with L-E-T at the end. And these are also the smaller forms. Yeah? Yeah, and please keep answering them. So we have kitchenette, which is a small kitchen. So if you go to resorts and all that, they'll always give you a kitchenette. Okay. Now this is the something like a kitchenette. So you have a fridge here. That's it. You maybe have an oven. Oven is there, and a small one, chimney, and then you have all these plates and all that, and then you have some crockery here, and that is the kitchenette. Okay, so this is kitchenette. Absolutely right. Absolutely right. Okay, a small fridge and cooking area is called a kitchenette. How do we pronounce this? And can you tell me what do you mean by this word? So give me the pronunciation, because in the beginning I've given you the pronunciation. The pronunciation of this word is valet. So when you sometimes take your vehicle and there's no space there to park your vehicle, so somebody will come here and say, sir, don't worry, we have valet parking. Now, what do you mean by valet parking? So valet parking, and valet is actually staff member. So he's a staff that parks the guest vehicles. So he is called valet, and the parking is called valet parking. This facility is called valet parking and is called a valet. So he'll take your keys, he'll give you a token, and when you come back, you just give him a token and he'll give you your vehicle back. Okay, so this is called valet. Is this good one? Kaisa laga aapko? How is this? This you have at some other place also. What is a porter? Now again, mind the pronunciation. Don't pronounce it as porter. So it is what? This is porter. So what do we call it? Porter. Now porter means what? So porter is somebody actually who carries your luggage, and you get them at a station also. So the porter carries guests back to their rooms. So this gentleman is like a porter. Okay, so you have a porter there. Is this clear? So we have porter who will carry your luggage there. So we have bellboy and then we have porter. So I'll just take you to the bellboy again. This is valet. Okay, this was kitchenette, and this is bellboy. Okay, he does the same thing. Bellboy. So generally the bellboys actually, they'll take your luggage to the rooms, and they have this trolley also. Okay, this is called luggage trolley. So you have in most of the good hotels, you will get this luggage trolley, and then there will be a bellboy
Why they are called a bellboy? Because when you press that particular button bell, so these people will come. So porter does almost the same thing. Okay, so he's a porter. How do you pronounce this? How do you pronounce this? Great. Yeah, kuli we call it. This, how do you pronounce this? This is called concierge. Now, some people get confused between a bellboy and a concierge. Concierge has got altogether a different role actually. It's a post there in a hotel. So what he does is he only passes information. He helps the guest and gives information. So a concierge gives information and helps the guest. So this gentleman is a concierge. So sometimes you'll get a separate counter and where it is written concierge. So if you want some, maybe that you want to book a taxi and all that, and you don't see any desk, good hotels, they have got travel desk. So you can go to travel desk and book it, but if you can't see anything, you can't see a travel desk, you can go to the concierge and say, yeah, I need help with my taxi booking and all that, and he'll help you. Okay, is this clear? Yeah? Okay, by the way, we have our personal mentorship program, and you can take that. And if you are interested, it is only for professionals and housewives. So our number is 96483 96484. Okay, and of course subscribe our channel Learn English with ZiTA as well. Don't forget that. I'm there on Instagram as well. Do follow us there on Vinit with Vinit. Okay, now let's come to the next one. That's very, very important. So I'm going to ask you certain sentences. I'll give you the Hindi of these sentences and you gotta give me the English of these. Okay, but we'll do it very, very, very fast. Okay, हम बहुत तेजी के साथ करेंगे. Are you all ready? If you are ready, just write RTG. Ready to go. Here we go. The first sentence is, क्या आपके यहाँ कमरा खाली है? How would you ask this? You go to a hotel and the first thing you ask is, in English, how do you ask? कमरा मिलेगा क्या? How do you ask कमरा मिलेगा क्या? कमरा खाली है क्या? And especially when you want to ask कमरा खाली है. Okay, great. How do you ask कमरा खाली है? I'll tell you. This is how you ask. Do you have any room available? Okay, so simply you can say, by the way, खाली कमरे को हम क्या कहते हैं? और अगर कमरा सभी कमरे भरे हुए हैं, how would you say that in English? I'm sorry sir, all the rooms are dash. सभी कमरे भरे हुए हैं. तो आप इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? जल्दी से मुझे बताइए, सभी कमरे भरे हुए हैं, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? All the rooms are, yes, you're right. All the rooms are occupied. Okay, great. Very good. We can say, do you have a vacant room also? That's very good. So full की जगह occupied. Okay, so occupied is a better word by the way. So do you have any room available? Yeah. मैं रिजर्वेशन करना चाहूंगा. वाह. अब आपने कहना है कि मैं कमरा बुक कराना चाहूंगा, मैं रिजर्वेशन करना चाहूंगा. सो रिजर्वेशन और कमरा बुक करना एक ही बात है. ओके, यू कैन रिजर्व a seat in a train. You can also reserve maybe a ticket. You can reserve a table. Okay, तो आप कैसे कहेंगे जब आपने कमरा रिजर्व करना होता है? How would you say that? So you will say, I would like to. Now this is a very good structure when you want to say, मैं ये करना चाहूंगा. I would like to make a reservation. So reservation करने को बोलते हैं make a reservation. अगर आपने कमरा किया हुआ है, I've already made a reservation. I've already made a reservation for a room. I've already reserved a room for myself and for my guests. I've already reserved a table for two. Okay, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं reserve a table. Reserve is a verb also. I need to reserve a room. Absolutely right. I want to do reserve a room नहीं. I want to reserve a room. Reserve there is a verb. So reservation is a noun and reserve is a verb. Okay, ये ध्यान रखिएगा. Engage से अच्छा occupied है. Great, very well done, बहुत बढ़िया. Packed, yes, we can also say packed. Okay, I'm sorry sir, the hotel is packed. Okay, हम ये भी कह सकते हैं, पूरी तरह से पैक है. Okay, कई बार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, so the restaurant is packed, jam packed, पूरी तरह से भरा हुआ. Then you have to be in the waiting queue. Sir, you are in the waiting queue. ओके, हम ऐसे करके बात करते हैं. खैर, अगर मुझे ये कहना है, मुझे एक डबल रूम चाहिए, ये तो बहुत ही आसान है. जल्दी से बताइए, इसको कैसे बोलेंगे? मुझे एक डबल रूम चाहिए.
मुझे एक डबल रूम चाहिए, तो आप इसको कैसे कहेंगे? सेम वे, सेम वे, I would like to, अब instead of saying reserve, you can use book. I would like to book a double room. No? So the thing is that you can use different words, different kinds of sentences. We are going to go to some tougher sentences now. अब ये तो हल्के थे, लेकिन अब क्या आप मुझे कॉल करके 7 बजे उठा सकते हैं? ये बढ़िया है। होटल में कॉल करके सुबह उठाने को क्या कहते हैं? उसके लिए खास फ्रेज आता है। टेल मी दैट फ्रेज and you should know how to so, and actually the people who are working in hotel, they know this terminology, or those who have been there. So suppose you have a flight in the morning, maybe at 6 or 7 a.m. So you would always at night, you would call the reservation, or you would call the reception and say, I want a dash at 5 a.m. tomorrow or 4 a.m. tomorrow. So what is that called? What is that called? Wake up call. Absolutely right. Now that is called a wake up call. So अगर आपने ये कहना तो आप कैसे कहेंगे? Can I have a wake up call at 7 o'clock please? सुबह 7 बजे आप मुझे उठा देंगे? ये आप घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। I've got my train tomorrow. Can I have a wake up call? Okay, आप मुझे सुबह 7 बजे उठा देंगे, लेकिन होटल में तो बहुत इस्तेमाल होता है। वेक अप कॉल का हम इस्तेमाल बहुत करते हैं। आप किस समय नाश्ता देते हैं? अब यहां देने को क्या बोलेंगे? दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, द वर्ब। व्हाट विल बी द वर्ब लाइक? जल्दी से बताइए मुझे। आई विल हैव सम वाटर बाय दैट टाइम। आप किस समय नाश्ता देते हैं? हाउ वुड यू से? नो, वुड यू अलार्म मी एट 7? नहीं, अलार्म का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन वो चेताने के लिए करते हैं अलार्म का इस्तेमाल। ओके, थोड़ा अलग हो जाएगा। या इसके लिए हम सर्व का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपने होटल में कुछ वो देते हैं तो वी कॉल इट सर्व। एट व्हाट टाइम डू यू सर्व? नाउ व्हाट इज दिस कॉल्ड? हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? या ना, अवेकन नहीं, अवेकन वी डोंट यूज वेक मी अप। ओके, वेक मी अप। सो अवेकन की जगह वेक मी अप। अवेकन एडजेक्टिव की तरह काम करता है और वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। एट व्हाट टाइम डू यू सर्व ब्रेकफास्ट? सो इसको ब्रेकफास्ट मत बोलिए, बहुत फास्ट। देखिए, जब ब्रेक और फास्ट मिल जाते हैं तो ब्रेकफास्ट हो जाता है। बस इतना ध्यान रखिए। अब आएगा मजा। इसके इंग्लिश बनाकर दिखाइए तो बहुत मजा आएगा। क्या हम ब्रेकफास्ट मेन्यू, अब ये मेन्यू है, मीनू नहीं, क्या हम ब्रेकफास्ट मेन्यू से ऑर्डर कर सकते हैं, या आप सबके लिए इकट्ठा लगाते हैं? अब वो जो इकट्ठा लगाते हैं ना, टेबल पर बड़ी लंबी सी टेबल होती है, उसमें तरह तरह के जो हैं वो डिशेस लगा देते हैं, जैसे शादियों में होता है। तो जो शादियों में खाना लगता है, बताइए उसको क्या कहते हैं? और आप कभी कभी मेन्यू से ऑर्डर करते हैं। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप मेन्यू से ऑर्डर करते हैं ना। सो यू जस्ट चेक योर मेन्यू एंड यू ऑर्डर इट। सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? दोनों को ऑर्डर करने का या लेने का एक तरीका है, उसके लिए एक वर्ड है। व्हाट आर दीज टू सेपरेट वर्ड्स एंड हाउ वुड यू यूज दीज वर्ड्स? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, या ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। हाउ वुड यू यूज दैट? सो आई एम गोइंग टू गिव यू बोथ द वर्ड्स, बट यू शुड ट्राई इट फर्स्ट योरसेल्फ, एंड द नेक्स्ट टाइम यू गो टू अ होटल, सो जस्ट टेल देम this way. Okay, and let me tell you, hotel and all these services, or maybe customer service, these are wonderful places where you can practice English, because even if you commit a mistake, they will not laugh at you. They would still say you, yes sir. So you can always prepare some phrases, some words while you are going for a restaurant or a hotel. Okay. Yeah, so what are the words? So I'll give you both the words. How do you say? Can we order breakfast? Now this was the word that I gave you in the beginning. A la carte. A la carte. Okay. French में इसको बोला जाता है sorry, French में इसको बोला जाता है a la carte. तो ट के ऊपर थोड़ा सा जोर दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में a la carte. तो जब a la carte आप करते हैं तो आप मेन्यू से ऑर्डर करते हैं। आ ला कार्ट का मतलब ये होता है बाय द मेन्यू। क्या मैं मेन्यू से ऑर्डर कर सकता हूँ ब्रेकफास्ट? लेकिन ज्यादातर होटल में आप ब्रेकफास्ट मेन्यू से ऑर्डर नहीं करते। अगर वो इंक्लूडेड होता है तो बिल्कुल पक्का। लाइक आप होटल में जाएंगे तो उसमें टैरिफ में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है।
और जब वो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है तो वो क्या करते हैं, सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक ब्रेकफास्ट लगा के रखते हैं, एंड यू कैन कम टेक ब्रेकफास्ट एंड देन गो. नाउ दैट इज कॉल्ड बुफे. सो हाउ डू यू से, कैन वी ऑर्डर ब्रेकफास्ट आ ला कार्ट और डू यू हैव बुफे सर्विस? आप कैसे ब्रेकफास्ट देते हैं, आ ला कार्ट देते हैं या बुफे देते हैं? या वेरी गुड, वेरी गुड. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने कैसे कहना है. सो यू वुड से, कैन वी ऑर्डर ब्रेकफास्ट आ ला कार्ट और डू यू हैव बुफे सर्विस? इज दिस क्लियर? कैन आई गो फॉरवर्ड, कैन आई मूव फॉरवर्ड? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. हाँ, क्या हमारे कमरे में एक और बिस्तर हो सकता है या एक और बिस्तर लग सकता है? क्या आप हमारे कमरे में एक और बिस्तर लगा सकते हैं? सो समटाइम्स यू हैव योर फ्रेंड्स, योर गेस्ट विद यू एंड यू वांट टू हैव एक और बिस्तर. व्हाई शुड आई टेल यू English for that? Yeah? So give me the sentence for that. क्या आप हमारे कमरे में एक और बिस्तर लगा सकते हैं? How do you say that? कैसे कहेंगे आप इसको? जल्दी से बताइए, फास्ट. Yeah. And now this is what you should always remember. अगर वहां पर एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, so it should be an, not a. Could we have an extra bed in the room? Now remember, we can also use can, we can also use could. Can informal होता है, could formal होता है, polite होता है. So there you can use both. You can use can informally and you can also use could. So could we have an extra bed in the room? You can say that. Yeah? हाँ, क्या होटल में कपड़े धुलने की कोई सेवा है? What is कपड़े धुलने की सेवा क्या कहलाती है होटल में? Yeah, what do you call that? उसको आप क्या कहते हैं? कपड़े धुलने की सेवा को क्या कहते हैं जो होटल में होती है? जल्दी से बताइए. वेरी गुड. कैन यू अकोमोडेट वन मोर बेड इन आवर रूम? बहुत बढ़िया. इज इट पॉसिबल टू सेट द एक्स्ट्रा बेड? बहुत अच्छे. वेल ट्राइड. कैन आई हैव एन एक्स्ट्रा बेड? बहुत बढ़िया. यस. लॉन्ड्री. ओके, सो हाउ डू यू से दैट? डज द होटल हैव एनी लॉन्ड्री सर्विसेज? सो आपके यहां कपड़े धुल जाते हैं क्या? डू यू हैव लॉन्ड्री सर्विस? डोंट टेल देम और डोंट आस्क देम डू यू वॉश क्लोथ्स हियर? ना, लॉन्ड्री सर्विस. ओके, सो इसको हम लॉन्ड्री, हाँ, इज द लॉन्ड्री अवेलेबल हियर? इज देयर लॉन्ड्री अवेलेबल? नहीं, इज द लॉन्ड्री अवेलेबल हियर? ओके, दैट्स कॉल्ड लॉन्ड्री सर्विस. वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया. ओके, हाँ. अब कई लोग कहते हैं, भैया मैं वो वाला कमरा दीजिएगा जिससे समुद्र साफ दिखे. समुद्र हो ना हो, बाहर समुद्र नजर आना चाहिए. तो उस कमरे को क्या कहते हैं? क्या कमरे में से समुद्र दिखता है? यानी अगर मैं खिड़की खोलूं सामने सुबह सुबह, एक तो होता है मुझे हिल्स नजर आए, एक होता है मुझे समुद्र नजर आए, और घर के बाहर से हिल नजर आती होगी ना तो कभी नहीं देखेंगे. ओके, लेकिन कमरे के बाहर वो मिलना चाहिए. तो उस रूम को क्या कहते हैं? जरा जल्दी से बताइए. ओके, जल्दी से बताइए, उस रूम को क्या कहते हैं? दैट्स अ गुड वन. फास्ट. शुड आई गिव यू कि क्या हमारे कमरे से समुद्र दिखता है? हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश? I'll tell you. Okay, so when you go there and when you go like you are maybe on a beach, so you can say, does the room have a sea view? So hill view, sea view, बाहर का नजारा, समुद्र का नजारा. So आप इसको बोलते हैं sea view या sea facing room भी बोलते हैं इसको. Okay, very good. But this is called sea view. Yeah, does the room have a sea view? अब यहां देखिए, यहां room के साथ मैंने have क्यों लगाया? Can you tell me that I have does the room? And room is singular, third person singular, but I am using have. Third person singular के साथ जबकि have लगता है. And the reason for this have is not room, it is does. जब वो आंसर करेगा तो ये क्या कहेगा? Yes sir, the room has a sea view. Okay, तो हम ऐसे बोलेंगे. क्या हम कुछ समय बाद होटल छोड़कर जा सकते हैं? तो भाई आप अब जाने का समय हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि थोड़ा और स्टे कर सकते हैं, हम थोड़ी देर बाद जा सकते हैं. अब ये बताइए, होटल से जाने को क्या कहते हैं और होटल में आने को क्या कहते हैं? जब आप, तो उसका एक और टाइम होता है, तो उस टाइम को क्या कहते हैं? होटल से जाने का समय और होटल में आने का समय. व्हाट इज दैट कॉल्ड? फास्ट. होटल से जाने का समय और होटल में आने का समय, ये क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए. आई एम वेटिंग फॉर इट. ग्रेट, बहुत ही बढ़िया. सो आप देखिए, याद रखिए, इसके दो ही समय होते हैं. जब आप होटल में एंट्री करते हैं, दैट इज कॉल्ड चेक इन टाइम.
और जब जाते हैं चेकआउट टाइम। बस आपने ये करना है, चेक इन चेक आउट। तो आप जब कह रहे हैं जाने के लिए, कुड वी प्लीज चेक आउट अ लिटिल लेट, ओके, तो हम क्या बोलेंगे, कुड वी प्लीज चेक आउट अ लिटिल लेट, ओके, या। सो दिस इज द लास्ट वन परहैप्स, एंड दिस इज द लास्ट वन, ओके। हमने आपके होटल में आराम से स्टे किया, तो ये जल्दी से बताइए, और फिर मैं आपको एक असाइनमेंट भी देकर जाऊंगा जिसका आपने आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, लेकिन पहले मुझे इसका आंसर दीजिए। हमने आपके होटल में आराम से स्टे किया, बहुत मजा आया, थैंक यू सो वेरी मच। चलते चलते मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से स्टे किया, लेकिन आप कैसे कहेंगे, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे कि वी हैड अ कंफर्टेबल स्टे। बोल के देखिए जरा, वी हैड अ कंफर्टेबल स्टे एट योर होटल। अब कंफर्टेबल आपने कैसे बोलना है, होटल कैसे बोलना है, इसका ध्यान रखिएगा। होटल हिंदी का शब्द होता है, होटल इंग्लिश का, ओके। खैर, मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूं, एंड द असाइनमेंट यू विल ऑल ऑफ यू गिव आंसर, नॉट हियर बट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आवर असाइनमेंट इज दिस। आपके होटल में ये बताइए इसको क्या बोलते हैं, डैश का किराया कितना है। अच्छा चलिए, प्रोनाउंसिएशन मैं बता देता हूं, आप इसकी इंग्लिश लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों इसको बोलते हैं स्वीट। एक बहुत बड़ा कमरा जिसमें नहीं, एक बहुत बड़ा रूम होता है, उसके अंदर रूम्स होते हैं, और उसमें किचन भी होगा, सामान रखने की जगह अलग होगी, स्टोर टाइप होगा, एंड यू हैव 1 or 2 balconies, big balconies also, you have dining table also there, you have a kitchenette also, so that is called suite, okay। इसको स्वीट बोलते हैं, सूट नहीं बोलते, इसको ध्यान रखिएगा, हमने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी किया था, ओके। इसका आपने आंसर देना है मुझे कमेंट सेक्शन में, and thank you so very much, but before that we have this personal mentorship program. Those who are part of it, thanks a lot, and those who are not part of it, they can be a part of it by just giving us a WhatsApp message on 96483 96484. Thanks a lot, thank you so much, it was great, wonderful talking to all of you. See you there in our next particular video, but do use all these words